Hello dear students, welcome back to the power system class. I hope you all are doing well. In previous lecture, we have discussed about the solar map of India, some basics of solar power, solar energy and solar irradiation. Okay, now today we are going to discuss the solar power technology and various types of solar collectors. Now starting with solar power technology. So it mainly deals with two concepts, two things. First one is solar photovoltaic system that is our solar photovoltaic system, that is our solar photovoltaic system. That's nothing but solar cells that we use. You must have visited solar plants like Chanaka solar plants, such plants. Another one is concentrated solar thermal plants. This concentrated solar thermal plants, what they do, they first convert solar energy into heat energy, and then we convert that heat energy into electrical energy. And in solar photovoltaics, what we do, we directly convert solar energy into electrical energy. Okay, so that is our direct method. When we convert our solar energy directly into electrical energy, then that is called a direct method. And we use, what do we use? Solar photovoltaics, solar cells, solar panels. Okay, and for another one, for the other one, when we go passively or indirectly, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैसिव या फिर इनडायरेक्ट मेथड. ओके, एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि जो विंड एनर्जी है या बायोमास वेव एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, दोस आर इन वन वे अनदर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सोलर एनर्जी. सो उनको भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में कंसिडर कर सकते हैं. नाउ सोलर कलेक्टर, व्हाट इज सोलर कलेक्टर? ओके, सो एक डिवाइस है, क्या करता है वो डिवाइस? जितने भी सोलर रेडिएशन होते हैं, जो भी जितने सोलर रेडिएशन होते हैं उनको वो कैप्चर करता है और किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है. ठीक है, और ये जो डिवाइस होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? एक कुछ ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनमें ईदर फ्लूइड होता है या तो एयर होती है. ठीक है, और उनको हम हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं. इंसुलेटेड ब्लैक प्लेट होती है और एक ट्रांसपेरेंट कवर रहता है. ओके, we will be watching the diagrams and pictures of that in upcoming slides. Now there are two types of solar collectors. The first one is non-concentrating collector, another one is concentrating collectors. Non-concentrating collectors में क्या हो गया? Flat plate collectors will be non-concentrating, and concentrating में we have seen concentrating solar power plants. Okay, so वो हो गया आपका concentrating collectors में. ठीक है, now discussing about non-concentrating solar collectors, जिसमें दो टाइप्स होते हैं. पहला हो गया फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड अनदर वन इज डिस्कसिंग फ्लैट प्लेट कनेक्टर्स, जिसके दो तरीके के फ्लैट प्लेट कनेक्टर्स होते हैं. जो पहला हो गया दैट इज लिक्विड फ्लैट प्लेट एंड अनदर वन इज फ्लैट प्लेट सोलर एयर कलेक्टर. ओके, सो व्हाट इज फ्लैट प्लेट कलेक्टर? इज बेसिकली हीट एक्सचेंजर. क्या करता है वो? सोलर रेडिएशन जो है उसको वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करता है सेंसिबल हीट एनर्जी में. जो फ्लूइड जो होता है इसके अंदर, आई टोल्ड यू, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्लूइड दैट वी हैव यूज्ड इन आर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. वो जो फ्लूइड होता है, या फिर तो वी यूज़ एयर एज अ
कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, जो क्या करता है, दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या फिर डिफ्यूज सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड नाउ बिकॉज इट इज ऑल्सो अब्जॉर्बिंग direct and diffused radiation, solar radiation, we can even use them in cloudy days when the sun is not available. Okay, so ये जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ही ऑपरेट होते हैं मोस्टली, हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकते हम उनको, एंड दे आर वेल डिज़ाइन, उनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी सिंपल होता है, and we can use them in long run. Okay, now here you can see a figure of liquid flat plate collector. Let me use annotations here so it will be better for you. Okay, so here's the picture which is showing liquid flat plate collector. यहाँ पे आपको दिखेगा this is our absorber part which receives energy, which receives radiation. Okay, here's the heat transfer medium, this is the insulation used behind, here's the housing, and लास्ट में ट्रांसपेरेंट कवर. ओके, सो ये जो सरफेस जो होती है इसकी, ठीक है, जो अब्जॉर्बिंग सरफेस होती है, कौन सी सरफेस, ये वाली सरफेस, दैट मीन ये जो सरफेस हो गई अब्जॉर्बिंग सरफेस, दैट सरफेस इज नॉर्मली मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, जैसे कि कॉपर हो गया या फिर स्टील, एल्यूमिनियम, सच कंडक्टिंग मटेरियल्स. ओके, जो शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी को, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर पाए. ओके, और उनकी अब्जॉर्प्शन क्वालिटी, कैपेसिटी, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो. ओके, नाउ ट्यूब चैनल्स आर शोल्डर्ड और ब्रेस्ड टू द अब्जॉर्बर प्लेट्स. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो ट्यूब्स एंड चैनल्स जो है उनको शोल्डर किया जाता है अब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर टू सर्कुलेट द लिक्विड, जो हमको लिक्विड जो होता है जो सर्कुलेट करना पड़ता है टू रिक्वायर्ड टू रिमूव द thermal energy from the plate, right? We are receiving it but we need to remove it from this plate, right? So for that, tubes and channels. Now to minimize the heat losses and to increase the efficiency of thermal to increase the efficiency, what do we use? We use insulation, right? Whenever we want to minimize the heat losses, we use insulation. And we use it at the back side of the absorber plate. You can see absorber plate right here, and on the back side of this whole portion is nothing but insulation, and after insulation we have a housing mounted over it, right? And in the last there is a transparent cover. This is nothing but a transparent cover of glass of the flat plate collector, जिससे upward heat losses जो होते हैं, you absorb the heat over here, okay, but heat does not stay over here, right? It will evaporate, it will flow away. So in order to restrain the heat, there is a transparent cover over here, right? So we use that transparent cover. Now let's go to our another flat plate solar air coil. And yeah,
देर आर वेरी फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ दिस लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. कहाँ पे यूज़ होता है? स्पेस हीटिंग में यूज़ होता है, कूलिंग में यूज़ होता है, एंड जो डोमेस्टिक या एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में वाटर हीटिंग के लिए यूज़ होता है, बट only till 100 degrees Celsius. Remember? Now another one, which is flat plate solar air collector. So जो लास्ट वाला था लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, उसमें जो हमारी ट्यूब्स थी उसमें हम कैरियर फ्लूइड यूज़ कर रहे थे. सो वो जो कैरियर फ्लूइड है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा एयर से. ओके, हियर यू कैन सी एन इनलेट. ये पूरी एक मेटल फ्रेम यू कैन सी. देयर इज अ glazing over here, then absorber plate, insulation material, and flow tubes. You can see the flow tubes here, right? There's a header for the header here and outlet. Now एयर जो होती है वो सर्कुलेट होती है इन कांटेक्ट विथ ब्लैक रेडिएशन अब्जॉर्बिंग सरफेस. ओके, जब भी वो ब्लैक रेडिएशन अब्जॉर्बिंग सरफेस जो आपको नज़र आ रही है, कौन सी सरफेस? दिस सरफेस. सो एयर इज सर्कुलेटेड इन दिस सरफेस, और ये जो सरफेस क्या करती है, वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है, और ये जो एयर फ्लो है उसको वो क्या करती है? हीट अप कर देती है. ओके, एंड देन व्हाट डू वी डू? वी यूज एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड इन द होल फ्लैट प्लेट कलेक्टर. सो जो पहले जो हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? कैरियर फ्लूइड यूज़ कर रहे थे. सो नाउ वी आर यूजिंग एयर ओनली. ओके, so by that way we are eliminating heat exchanger. Okay, and because we were using metal tubes over there, वहाँ पे इरोजन का प्रॉब्लम होता था, फ्रीजिंग का प्रॉब्लम होता था, बट यहाँ पे those problems will not be, we will not be facing those problems here. Okay, and the passage, जो पैसेज है जहाँ से एयर फ्लो होती है वो हमेशा ब्रॉड होना चाहिए. ओके, ऑलवेज रिमेंबर पैसेज शुड ऑलवेज बी ब्रॉड. सो जो प्रेशर जो है वो कम रहे, और प्रेशर लॉस अगर कम रहेगा तो वी विल बी एबल टू ऑब्टेन हायर एफिशिएंसी. ओके, वर्किंग जो है उसका इज सिमिलर टू लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है? वी आर यूजिंग carrier fluid in liquid flat collectors, but we are not using any of the carrier fluids. Okay, we are using air only here. And mode of the heat transfer क्या हो जाएगा? यहाँ पे एयर हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड हो जाएगा. ओके, now moving further we will be watching applications of flat plate solar air conductor collectors. so ड्राइंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, इसका एंड स्पेस हीटिंग में यूज़ होता है. so now what are the applications and what are the advantages of flat plate collectors? Okay, there were two types. Now we discussed both, so we will discuss advantages. So first advantage is they are using both direct and diffuse solar radiation. Okay, and because we are able to use direct and diffuse solar radiation, what is the major advantage here? We can use it even in cloudy weathers. Okay, उनका मेंटेनेंस हमेशा लो होता है, कॉस्ट भी लो होता है, और कंस्ट्रक्शन हमेशा सिंपल होता है.
you're just seeing the construction part, right? It is very simple, and they don't do not require any orientation towards the sun. In the next upcoming solar collectors which we will be studying, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए you have to require orientation, which is not case here. Okay, so what are the disadvantages? सो सबसे पहले तो यू हैव सीन 100 डिग्री टेम्परेचर के लिए ही वो ऑपरेट करता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर पाता है, साथ साथ में इसका वेट काफ़ी हैवी है, एंड नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन. वाई? बिकॉज इट कैन ओनली ऑपरेट टिल 100 डिग्री सेल्सियस. देन collected glass surface and reflected glass surface collects dust, dirt and moisture. Okay, so it does not only collect solar radiation, but it also collects dust, dirt and moisture, and because of that you will be need to replace parts or maintenance. Then solar collectors are not tracked, और उसका जो एंगल जो होता है वो फिक्स होता है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, जब भी एंगल जो होता है उसको हम लोग फिक्स रखते हैं तो हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द अदर पार्ट ऑफ सोलर कलेक्टर्स विच आर कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स. सो कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, एंड देन वी कन्वर्ट दैट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो as you can see in the diagram, we are receiving solar radiation from the sun में जैसे सोलर रेडिएशन जो हमको मिल रहा है, वी आर कलेक्टिंग इट यूजिंग कलेक्टर्स. ओके, एंड देन हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था, हम लोग एज अ कॉन्सेंट्रेटर हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट में, वी यूज़ ईदर लेंसेज और मिरर्स. ओके, सो we concentrate that radiation, those sun rays at one point, और वो जो पॉइंट रहेगा that point is receiver point, and we convert that received energy into heat energy, and we send that heat energy into thermal storage. Okay, and then what do? We convert that heat energy into electrical energy. So we basically use a turbine, जो ये थर्मल स्टोरेज है उसको जो हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे, स्टीम में, एंड वी यूज दैट स्टीम टू रन द टर्बाइन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, and then that electricity we supply to the grid, and then it is transmitted into the line connecting to the grid systems. Now let's see this one in detail. So concentrating solar power system use mirror या फिर तो lenses to concentrate large area of sunlight onto a receiver. Okay, और ये जो लाइट जो रिसीवर पे हम लोग जो सनरेज को हम लोग गैदर कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट में कन्वर्ट करेंगे, और इस हीट का हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ दैट हीट टू ड्राइव द स्टीम टर्बाइन जो पावर जनरेटर से कनेक्टेड होता है, कपल्ड होता है. ओके, देन द इंटीग्रेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट विथ थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैन बी यूज टू जनरेट electricity during cloudy days and for hours after sunset. Because what do, we are not directly converting solar energy into electricity. Okay, we are firstly converting solar energy into heat energy, and then we are converting heat energy to electrical energy. So हम क्या कर सकते हैं कि solar energy को we can convert into heat energy during daytime, and then we preserve it for emergency situations or peak hours, or you can call it during the night time when sun is not available, and we can utilize that energy at that time. Okay, and this feature makes it flexible and partially dispatchable. Okay, now
we will be watching different types of CSP. So there are four types. First is, wait a minute, we have to move the screen first for that, right? So there are four types of CSP. The first one is parabolic trough system, second one power tower system, third one is parabolic dish system, and fourth one is Fresnel reflector system. So in this lecture we will be discussing parabolic trough system only. We will be discussing other ones in upcoming classes. Okay, so here you can see an image of parabolic trough installation, and here's an image of arrangement of it. Here's a reflector. We are using glass here, mirror here. Okay, and here's a receiver plate, absorber. Okay, so what do we have? A parabolic trough. Okay, parabolic trough shaped mirror, and we arrange it parallelly. You can see in the image, right? They are arranged parallelly. And they, what do? They collect solar radiation. Okay, जो पूरे एरिया में जितना भी सोलर रेडिएशन है, इट विल कलेक्ट इट, एंड व्हाट इट विल डू, जो एक उसका फोकस एक्सिस होता है, फोकल पॉइंट होता है, उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करेगा all that radiation. Okay, and what are they made of? They are made of glass based model. Okay, with silver polymer या फिर तो एल्यूमिनियम यूज होता है, हाईली पॉलिश्ड एल्यूमिनियम, बट वी डोंट यूज नॉर्मल एल्यूमिनियम, वी यूज हाईली पॉलिश्ड एल्यूमिनियम. एंड जो लेयर्स जो होते हैं पॉलीमर के, ओके, वी यूज ग्लॉसी फिल्म्स इन दोस लेयर्स. और जो मोस्ट इनर लेयर होता है, देयर आर मैनी मल्टीपल लेयर्स ऑफ दिस. ओके, सो जो मोस्ट इनर लेयर होता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्योर सिल्वर यूज़ करते हैं. इनर लेयर जो होता है, मोस्ट इनर लेयर होता है, उसमें हमेशा आप प्योर सिल्वर यूज़ करेंगे इन एनी टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर. ओके, सो रिमेंबर दैट. नाउ remember we have discussed we will be needing better orientation in concentrated solar collector. So we have to obtain the orientation जहाँ पे हम लोगों को maximum efficiency मिले. and हम लोगों को maximum efficiency कब मिलेगी? जब जो सोलर रेज है वो हमारी सरफेस को कितने एंगल पे मिलेगी? 90 डिग्रीज पे, राइट, परपेंडिकुलर मिलेगी तब. So orientation of trough type collector is kept in east or west or north east west or north south. So we have to keep it straight in order to obtain maximum efficiency, right? Now how does it work? So this system, इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टर मिरर है, ठीक है. वो क्या करता है? सोलर रेडिएशन जो है वो अब्सॉर्ब करता है. लाइक यू कैन सी सोलर रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है. सो इट इज़ अब्सॉर्बिंग इट, एंड इट इज़ what it is doing, it is concentrating all that radiation on one point. Okay, as it went triangle, okay, on one point. And then what do? This concentrated solar radiation, it includes the concentrated solar radiation incidents on the receiver pipe heats. ओके, एंड जो रिसीवर पाइप है वो क्या करेगा? जो हमारा फ्लूइड जो है, जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें, उसको हीट अप कर देगा. एंड बाय डूइंग दैट क्या होगा? सोलर रेडिएशन को हम लोग क्या कर देंगे? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. और ये जो हीट एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे? हीटिंग एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे. ठीक है, ये जो हीटेड एनर्जी है उससे हम लोग क्या करेंगे? टरबाइन जो है, स्टीम टरबाइन, उसको रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे. एंड स्टीम टरबाइन ड्राइव्स जनरेटर
and generator produces electricity. So uh, parabolic reflectors is rotated continuously about the axis. कौन सी axis? Axis of absorber. Why? To obtain that perpendicular angle, to obtain that 90-degree angle, so that solar radiation are always focused on the line with respect to change in the sun's elevation. Because in the morning sun का elevation जो होता है, कुछ sun का जो elevation होता है वो अलग होता है, जो उसका angle होता है वो अलग होता है, and throughout the day the elevation sun gets the elevation and the tilt changes. So according to sun's elevation you have to keep changing the angle of your system. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट हम क्या करते हैं, एक सर्वो मोटर यूज़ कर लेते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड MPPT, okay, maximum power point tracker system. So we use that system. You will be seeing this that system in upcoming chapters, not in this chapter only, but you will be seeing that in upcoming chapters or in upcoming semesters. The next one is power tower system. So we will be watching power tower system and the remaining three other CSPs. We will keep this lecture till here. So I hope you guys have understood what I've taught you, and we will be meeting in the next lecture. Thank you very much for listening.